Hello class. In this video we will discuss about formation of a spherical mirror, means spherical mirror कैसे work करता है. So as we discussed in last class, there are two types of spherical mirror, concave and convex. Okay, so first we discuss about concave mirror. So जो concave mirror होता है उसमें क्या होता है, it is a converging mirror. Converging mirror means it focus in a one point. So for example, this is a concave mirror and this is its polished surface, and the inward surface is, जो अंदर surface बना है वो कौन सा surface है, reflecting surface. Now ये जो कॉन्केव मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, इस मीन्स सर्कल, कोई से एक सर्कल का पार्ट होगा. यहीं से हम इतना ले लेते हैं तो ये कॉन्केव मिरर बन जाता है. मीन्स इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट. ओके, एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड पोल. इसको पी से डिनोट करते हैं, पोल को. सो इस सेंटर और पोल को हम लोग मिला दिए, और ये लाइन जो पोल के आगे जाती है इट्स कॉल्ड एक्सिस. ओके, नाउ द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर. द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर, पोल और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. इट इज अ प्रिंसिपल फोकस. एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस. जैसे सर्कल का सेंटर होता है वहाँ से जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम लोग रेडियस कहते थे. सिमिलरली इन द concave mirror, the distance between center and pole is called radius. Now one more thing, जो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस का, मीन्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. ओके, हेयर आई ड्रॉ पिक्चर. यहाँ एक पिक्चर बनाए हैं हम, उसमें क्लियरली समझ में आएगा. दिस इज अ वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ कन्वर्जिंग कॉन्केव मिरर. ओके, सो हेयर इज द सेंटर, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर and this is the pole. डिफरेंस बिटवीन सेंटर और पोल के बीच का जो पाथ होता है उसको कहते हैं रेडियस. ओके, एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, एंड डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, which is denoted by small f. Okay, and one more thing, the distance of the mirror, जो मिरर का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर और डायमीटर. ओके, नाउ in the above mirror, parallel rays are coming, fall in the parallel rays are fall in the reflected side of mirror, and as we know it is a converging mirror तो it focus in a single point. ये जब रिफ्लेक्टेड साइड पे जब फॉल होता है उसके बाद ये एक पॉइंट पे फोकस करता है. सो इट फोकस इन अ प्रिंसिपल फोकस, एफ, कैपिटल एफ पे ये सारी फोकस करेंगी. ओके,
this is the working process of concave mirror. एंड जो रेज आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको डिनोट करते हैं आई से. एंड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकलती है इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, which is denoted by small r. Is it clear? Now similarly here I write also about the center and principal focus. Center means center point of a sphere is denoted by C. Concave mirror, in concave mirror center is in the सामने होता है, and in the convex mirror center पीछे होता है. ओके, अगेन पोल एंड सेंटर की मिड पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस. एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज called focal length, which is denoted by small f. Similarly in the convex mirror, convex mirror के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं. As we know, the reflecting surface of the convex mirror is outwards, means इसका जो reflecting surface होता है वो क्या होता है, outward means बाहर की तरफ होता है ये. ओके, एंड द पॉलिश सरफेस क्या होता है इसका, पीछे अंदर की तरफ होता है. ठीक है. एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. रेस तो आती है पैरेलल, बट टकराने के बाद ये दूसरे पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी पोल पी डिनोट किया गया है पी से, center C, distance between pole and center is denoted by R. Midpoint of the pole and center is capital F, and distance between pole and capital F, which is principal focus, is focal length. Okay, so the ray, incidence ray, parallel rays, beam of rays are fall in the reflecting side of the convex mirror, and it reflecting in the different path, but it focused, it's make a imaginary or virtual image which is in the polished path, and it's make in the imaginary image in the focused Now the next topic is sign convention for spherical mirror. Means spherical sign means positive or negative. So in concave mirror, I have drawn here a concave mirror. So this is the center, and this is the pole, this is the axis, and this is the principal focus. What is principal focus? Distance between midpoint of the center and pole is principal focus. Okay, so now if the image will be made in the polished surface, then it will be the positive,
and if the image made in the reflecting surface, it will be the negative. In the concave and in the convex, both of mirror, this same rule is follow. If the image will be created in the polished surface, it will be positive, and if the image will create in the reflecting surface, it will be negative. And now we will discuss some points. In the spherical mirror, four distances are parallel to the principal axis. What is principal axis? As I tell earlier, right now, this is the principal axis. So four distances are parallel to the principal axis, and two distances are perpendicular to principal axis. Okay, so four distances are object distance, image distance, focal length and radius. These four distances are equal to the principal axis. What is object distance? Distance from pole to object. Distance from pole to object. Distance from pole to object is object distance, which is denoted by u. Okay. Now image distance. Distance from pole to image. This is the image. So distance from pole to image is denoted by v. And focal length. What is focal length? Distance from pole to principal focus or focus. Distance from pole to focus. This is the focal length. Okay. And last thing, radius. Distance from pole to center is called radius. It is denoted by r. Again I am repeating, the four thing in the spherical mirror are equal, which is object distance. Object distance is distance from pole and object. This is the object and this is the pole. Distance from pole to object. Second one, image distance, means distance between image to pole, which is denoted by v. Focal length, distance from pole to focus, means pole to focus, it's called focal length, denoted by small f. And radius, distance from center to pole, it is radius. These four things are same. Now two distance perpendicular to principal axis, means two distance are perpendicular to principal axis. First one is height of object. First one is height of object, means height of object, which is denoted by HO. And second one is height of image, which is denoted by HE. These two are the perpendicular to the principal axis. Okay, that's it. Just remember two things in the sign conversion. A positive side is the polished surface. Polished surface is the positive and the reflecting surface is the negative. Was these two picture of the concave and convex? Positive surface is the polished side and the negative is the reflecting side. Okay, just remember these two things. Now the mirror formula. Based on this formula you have to solve different questions on the light chapter. So reflection between object distance, image distance and focal length. Relation between object distance, image distance and focal length. So mirror formula will be 1 by v, which is image distance, plus 1 by u, means object distance, means 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f equal to focal length. This is the
formula of the mirror. Okay, now magnification. What is magnification? Relation between height of image and height of object, and as we discussed, height of object and height of image. So ratio between height of image and height of object is called magnification. In a plane mirror, size of image and size of object are same, but in the spherical mirror, height of object and height of image are not equal every time. So HO is stand for height of object and HE will be height of image. So the ratio will be HO upon HE. It is called magnification, and magnification represented by M. So M equal to HO, height of object, and upon height of image. Okay. Suppose in the question we did not have HO and HE, then how can we find the value of M? By V and U. This is the also equation of M. We can find out the value of M by minus V upon U, where V stands for distance from pole to image and U stands for distance from pole to object. Okay, and if the value of M is negative, then image will inverse. मतलब कि अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है, m इक्वल टू -1 माइनस समथिंग एनीथिंग वैल्यू माइनस में आता है, देन जो इमेज होगा वो इन्वर्स होगा. इन्वर्स मीन्स उल्टा. एंड इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव, द इमेज विल फॉर्म ऑन सेम साइड. मतलब इमेज जैसा है वैसा ही दिखेगा. ओके, so now we will discuss an example. A convex mirror is used to form rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. मीन्स बाइक या कोई कार की जो लाइट होती मिरर होती है जिसे पीछे देखते हैं, रियर मिरर बोलते हैं उसको, उसका कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है. इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. ओके, सो सबसे फर्स्ट चीज क्या दिया है? इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर, नाउ इट विल बी P. ओके, कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पे सेंटर होता है? ऑलवेज इस साइड होता है. ओके, नाउ इन द गिवन क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3. रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस. द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 3 मीटर. इफ अ बस इज लोकेटेड फ्रॉम द मिरर, मिरर से हम लोग लोकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल बस यहाँ पे है. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन बस एंड द मिरर इज 5 मीटर. ओके, नाउ in the solution radius will be positive because we have learned in sign convention. राइट साइड का वैल्यू क्या होता है? the value of right side will be positive and value of left side will be negative. Okay, so R will be positive and U will be negative, in means -5. So we have R, so can we find the value of F?
F stands for focus. Can we find? Yeah. Why? Because, see carefully, because we have value of P and C. Distance between P and C is called R. Okay, radius. And midpoint of P and C is called focus. Means F equal to R by 2. Why? P और C को हम लोग R बोलते हैं, एंड मिड पॉइंट मतलब P और C का जो हाफ होता है, मिड पॉइंट, जैसे ये लाइन है 2 सेंटीमीटर का, और इसका अगर मिड पॉइंट होगा तो 1 सेंटीमीटर का होगा. इज इट क्लियर? सो सिमिलरली द मिड पॉइंट ऑफ P and C is called focus. तो F equal to R by 2 equal to 3 by 2, and we have U. We can find the value of V by the formula 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F. It is a mirror formula. So we just put the value on the U for the U and for the F. Now ये यहाँ पे उल्टा हो गया, and -5 will be there. So 1 by V equal to 2 by 3 plus 1 by 5, and if we find the LCM of 3 and 5, there will be 15, and ऊपर क्या हो जाएगा 10 plus 3, so equal to 13 upon 15. So value of V equal to 15 upon 13. Why? Because 1 by V equal to 13 upon 15. ओके. सो अगर V निकाले तो ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, एंड 13 विल बी इन डाउन स्टेयर. ओके, तो V इक्वल